કેમ છો? કેર ઇમિગ્રેશન્સ અને વિઝા સર્વિસીસ બધા સ્ટુડન્ટ્સ અને પેરેન્ટ્સને વેલકમ કરે છે. આજના વેબિનાર્સ જેની ઇન્ફોર્મેશન્સ આપણે આપવાની છે સ્ટડી અબ્રોડ ઉપર. થોડીક જ વારમાં આપણા એક કોલેજના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ આપણી જોડે જોડાશે. સો આપણે જરા એમને વેઇટ કરીએ છીએ કે તરત આપણી સાથે જોડાય. વી હેવ ટુ વેઇટ ફોર ઇટ. અને 5-1 મિનિટ્સમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું આજનું. સો ઇન્ડિયા લોકડાઉન અનલોકડાઉન 2 તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. એ સાથે જ અબ્રોડ સ્ટડી માટે નું ઓપ્શન્સ, અબ્રોડ સ્ટડી જવાની ઇન્ક્વાયરીઝ, અબ્રોડ સ્ટડીની અંદર બીજા સ્ટુડન્ટ્સને જોડાવાની પ્રોસેસ, ક્યારે જવાશે, કેવી રીતે જવાશે વગેરે વગેરે સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યું છે. તો જેમ જેમ ઇન્ડિયા અનલોકડાઉન 2 તરફ આગળ વધશે એવી જ રીતે વધારે ઇન્ક્વાયરીઝ થશે. પેરેન્ટ્સ, સ્ટુડન્ટ્સ વધારે પ્રમાણમાં અબ્રોડ જવા માટેનો પ્રયત્ન કરશે. અને વી હેવ ટુ ફોલો देम, वी हैव टू ट्राई टू हेल्प टू देम. एंड આપણે सब लोग इकट्ठा होकर उनको मदद करेंगे कि जो स्टूडेंट्स है वो किस तरीके से अपना कार्यक्रम वो कर सकते हैं. और थोड़ी ही देर में अपने ऑफिसर्स अपने साथ जुड़ते हैं. श्रद्धा उनका नाम है और वो कनाडा की UNBC यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है. हाय श्रद्धा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? I am fine, Shraddha. Thank you for give your valuable time to the team of Matrix Immigration and Visa Services as well as for the Care Immigrations. We welcome you on board on our YouTube channel. Thank you so much for having me over here, Nishit. And I'm so happy to be associated with Matrix and Care Immigration. Thank you. It is totally pleasure of my and my teams. And today we have to talk, Shraddha, because when we are going to, in India, are going to unlockdown 2, then we have to receive more queries, more informations, more queries from the students and parents to study in abroad, right? Okay. Particularly, some of students are very, very crazy to study in university. Right. So today we have to talk that what is the extra benefits of students who studied at the university in Canada. Perfect. So can you give me a little bit brief? Yeah, thank you. Yeah. Yes, absolutely. Studying in universities and institutes like teaching universities, right? So there's a difference between two types of institutes in Canada. One is like teaching institute, and the other is research-based institutes. So research-based institutes are universities basically. So the course curriculum and the methodology and pedagogy is such that it is pretty robust and dynamic. So it not only facilitates your career path, but also it is said that if you are studying from university, your professional growth is like 5 years ahead to those of the diploma students or advanced diploma students. So it is not it has nothing to do with the education system or something is good or bad. It is just the pedagogy and the course and curriculum that the student has, right? Or the student goes through. For example, if they are studying in, let's say, diploma, or if they are going for advanced diploma, in that case the course credits would be around 60 or 90 depending on the number of years or number of semesters they are going to study. But if they are going under university studies, the course credits are around 120. I'm talking about the base level from Hello. Hello. You connectivity issue over here. So let me just begin with the course credits. So basically your skill sets are directly linked with the course credits that you are having. So your level of job, your earning capacity is totally depend on the level of your study. For example, if you have 60 credit points, you will be starting with the administrative or clerical job.
Similarly, if you're starting with your desired profession, if you want to work in a desired profession, university education is a must thing, where the starting salaries are around 60,000 Canadian dollars. In terms of diploma, it is around 25 to 30,000 Canadian dollars per annum. So this is how the university plays a major role in shaping up the careers of the student, basically. That's what I can tell about university Yes. education. Basically, Shraddha, tell me that the what is the advantage of your university locations? Okay, so before I begin with the university location, let me just give a small brief about me. So this is Shraddha here, and I look after particularly University of Northern British Columbia. That is UNBC. University of Northern British Columbia is a public intensive research-based university, and it is located at Prince George in British Columbia in Canada. So Prince George. Now location. Why location is very important to understand, to have the student or to go for the student is the very first thing. Whenever student wishes to go to Canada, in that particular case, he is not only looking for education, but that is also the student is also looking for work time opportunities, whether it is part time or whether it is full time by studying. Not just that, after studying the post study work permits as well, because the major purpose is definitely studies, but the next major purpose is also the work earning capacities, also weather conditions. So Prince George is a place, it's a very famous city in Northern British Columbia. It is the capital of Northern British Columbia. The population is around 90,000. So, and there are only two institutes at Prince George. So if the number of the percentage of skill set students or skill set professionals is very less compared to other places. So that really helps to fetch up good jobs. And if I talk to you about particularly about UNBC, in this particular case, UNBC students are highly employable. In fact, they are recommended by the majority of the, what do you say, majority of the employers in British Columbia. You can Okay. check through the, you know, yeah, you can check through the www.welcomebc.ca. It is a provincial governmental organization for British Columbia, where they have written how the employability skills are being matched, what are the students they would want to go for, employability, how employability skills play a major role in getting the jobs after their studies, basically. Okay. So Prince George is one of the Uh, places where it is. Here, Shraddha, we have to receive a couple of questions we received on Okay. questions on our live seminar. Okay, one of students, Mr. Shah, asking us, does your university have any offer for a scholarship for the potential students from India? How they will get, Yeah. and what is the process for applying to scholarship in your university? Okay, it's a very good question, Nishit, because students who really looking for university education, they also look for scholarships and all. So UNBC is very famous in giving the scholarships and bursaries to the students, as in it is like it is dependent on two different things. One is like academic credentials, and the other is like financial aids, or when the student is not capable to pay up the fees. In that particular case, the university funds or university sponsors or give the percentage of fee structure. So that is like these are the two different ways where the student can get in. If you talk about the recent intake, that is September, right now we do not have scholarships, but all the programs are online. That will definitely will cover in the coming section. But yes, my university gives scholarships and all, but that will be for Jan 2021 intake onwards. Okay. My one of students are asking a questions like, what is the deadline for September 20 and Jan 21 for the applications? Oh, okay. Right now, the deadlines are not disclosed yet. Honestly, it has not been disclosed yet, because they are also looking for embassy to open and to understand when there would be, cross-border, the transport or the commutation would start cross-border across the globe. So they're just waiting for that. But if you talk about online programs for September, that will go till I guess July last week or August first week. And for Jan, it would be somewhere around in October or November. Yet the proper date has not been disclosed. Okay. One of students
Ashutosh, uh, Okay. he's asking, does university accept applications with low IELTS, like overall 5.5 band, and he will apply with Tally course or some foundation course or some courses with that main course will start or something like that? Okay, Nishit, it's a very valid, question. The thing is, students in India are not getting why they are giving this, language proficiency test. Hmm. Basically, we are non-native speakers, and that's why we would require to prove that we are proficient in English language, and that's how there is an eligibility criteria for this particular, this particular parameter is there. Now, if I talk to you about UNBC, UNBC is an intensive research based organization. So they have the set parameters. Not just that, it is highly ranked or top ranked university in Canada, that is in top 3 for more than a decade. So in that particular case, they have been very flexible with the number of applications, but the only criteria they have set is just two. One is academic credentials, and the other is IELTS proficiency test. Yes. So they would not accept below 6. So they have the 6.5 overall with no less than 6 in each of the modules. So So, that's there. so you said that overall 5.5 they cannot apply with any foundation or any course, right? We don't recommend it, right? Earlier we had this thing, Nishit. The only Hmm. point was, so they started accepting applications, but the students were not able to cope up with the robust curriculum over there, and they started flunking in the examinations. They started failing in the examination. Okay. In that particular case, so they started with this set parameter of 6.5, no less than 6 in each. Okay. One of students' name is the Heta Patel. She is Hmm? asking process time for admissions. Get the LOA means if the students and applied, right, and Hmm. what the Hmm. time frame he or she will wait to get the LOA, Hmm. Hmm. get the answer from the university. Okay, my university, like the one of the biggest USPs of my university is the offer letter turnaround time. So if you apply today and let's say your application fees is deducted today, you'll get the admissibility letter within 2 to 3 days from the university, which means the university will reply within 2 to 3 days, stating that whether the student is getting the offer or not. In fact, then if it is positive, which means if the student has got the offer, usually 90% is the case. अगर आप evaluate पहले कर देते हैं, so usually student gets the offer letter. Then the university gives time to pay the deposit amount. The moment the student pays the deposit amount, within 3 days the student will be getting letter of acceptance. So it is totally dependent on the student. Okay. Now another student's name is Paridhi Shah. She is asking, Hmm? what is the university provide the accommodations, hotel facilities for the undergrad students? It is compulsory for first year students to get that accommodation at the university, or students will arrange their accommodation by their own. What is the information on the accommodation part? Okay, so the students who would be going for UNBC are pretty young as in they would be 17 or 18 years old, right? Yes. So there are definitely on-campus accommodations, right? But that is totally dependent on the student to student. If the student wishes to go for on-campus accommodation, they can go for it. If they are looking for off-campus accommodations, they can definitely go for off-campus also. In case of off-campus accommodation, we have International Help Desk Center where they'll be able to get the references of the past students or the students who are already studying over there, and they can get connected with the international students for the off-campus accommodation. Whereas if they want to go for on-campus accommodation for the first year, they have to compulsorily go for the cafeteria or 7 days a week का meal plan. लेकिन बढ़िया बात ये है कि वहाँ पे इंडियन फूड मिलता है कैफेटेरिया में, Okay. हफ्ते में 2 बार मिलता है, साउथ Okay. इंडियन नॉर्थ इंडियन सब मिलता है, तो Okay. चल जाएगा स्टूडेंट्स के लिए. ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया है तो फिर. ओके. हम्म. द स्टूडेंट्स रमनदीप कौर. हम्म. Ramandeep Kaur, she is asking like she studied from Punjab board pass out students. Can हम्म. she applied from Punjab? Because
you know, the some of students are heard about north part of India. Some of universities are not accepting applications from Punjab board pass out students. So what is the our parameter in university in that case? Okay, my university is not discriminating students from the part of Great. the country. That's Okay. the biggest thing about the university. In Okay. fact, the university is looking for the qualitative students, and that student can be from any part of the world. And that's the reason my university is also accepting NIOS, that is Open School Learning. So open Okay. boards are also accepted. The only thing is the student should be qualitative or should be qualifying the standards of the university. That's the only parameter. Okay. Okay. One of Yes. students from Mumbai, Makran Marathi, he asking that students they have to send their sealed envelope transcript to the university because Makran believe the Canada colleges are accepting documents on scanned documents on the notarized true copy or original scanned documents, right? But that they believe the university at some of time they are asking more document process like seal envelope documents they have to send to their institutions to the Canadian university. So what is that documentations parameter in our university in that case? Okay, for UNBC, there are two different things. Okay, one is application process and the other is registration process. Okay. Now, for application process, the documents required are pretty simple. Those are like the application form, passport, right? The IELTS TRF copy, IELTS or any language proficiency test, right? And 10th certificate, 12th certificate, right? These are the only 5 documents. Those would be required for application process. Once the student has got the offer letter and the admission process is confirmed, but while registering, as in terms of the student, once they go there, they have to register themselves. So at that particular time, they have to carry the transcripts. Either they can courier it directly to the university or they can carry with themselves and submit it by them. Okay, so sorry, Shraddha. So you said that students don't need to go their institution and institution send their documents to the UNBC. Student take care carry themselves. The point is they have to submit 7 days prior to the commencement of their program. For example, अगर उनका 7th को start होता है तो एटलीस्ट 1st को डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए, या तो वो खुद दे दे या तो कुरियर कर दे. बहुत बढ़िया ग्रेट. सो आई होप सो कि मकरान जी को जो सवाल था उनका कि भाई यूनिवर्सिटीज में देर लगती है या फिर वो लोग बिलीव करते हैं कि यूनिवर्सिटीज आस्किंग अ वेरी different documents and a big documents and the lengthy document process. ऐसा नहीं है. So you can apply from right. Yeah. हाँ मतलब letter of recommendations, statement of purpose, ऐसा कुछ application के लिए नहीं लगता है. वीजा के लिए लगेगा तो, लेकिन application process तो नहीं. Okay. दूसरी एक स्टूडेंट है हमारे पास जिन्होंने अभी हमको YouTube में एक मैसेज किया है through the YouTube's. वैशाली पटेल from Mehsana. She is asking what the application charges from our university. Okay, UNBC का application fee is $125 Canadian. Okay. तो वो क्या क्रेडिट कार्ड से पे करना है या ऑनलाइन लिंक है फ्लाई वायर जैसा कुछ है? Okay, it's a credit card payment. That the credentials, the credit card credentials, you have to mention it on the application form itself. You don't have to pay, put up the different application form for paying up the application fee or something like that. Students कभी sorry श्रद्धा, स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि कई एजेंट लोग उनको बोलते हैं कि भाई ये यूएनबीसी का एप्लीकेशन चार्ज फ्री है या उसका एप्लीकेशन वेव्ड है, आप हमको एप्लीकेशन तो हम कर देंगे करके. तो मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाता है. कई लोग बोलते हैं फ्री वेव्ड है और हमारे जैसे कंसल्टेंट बोलते हैं नहीं देयर आर एप्लीकेशन चार्ज. तो ये कंफ्यूजन होता है. हाँ. Okay, UNBC, I am the direct representative of UNBC. तो अगर मैं ना बोलूं कि फ्री है तो फ्री नहीं है. बिल्कुल फ्री नहीं है. It is not been waived off. Every student, अगर मुझे अपने घर के बच्चों को भी भेजना है तो भी उनको $125 पे करने पड़ेंगे. बढ़िया. तो भी ये क्लियर हो गया भाई. वैशाली ये आपको आंसर मिल गया होगा
कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में एप्लीकेशन चार्ज है और वो आपको ही पेड करना है डायरेक्ट टू द यूनिवर्सिटी. आपको कोई एजेंट कंसल्टेंट को वो चीज नहीं देनी है. सो देयर आर द एप्लीकेशन लिंक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म्स, सो दे हैव टू सेंड डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी अकाउंट और आपको उसका रिसिप्ट भी मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड. ओके, अनदर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. स्टूडेंट है राकेश शाह फ्रॉम बड़ौदा. उसने कहा है कि कोऑप प्रोग्राम्स यूएनबीसी में कोऑप प्रोग्राम्स है तो कैसे है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और कोऑप प्रोग्राम्स की भी फीस होती है, ये पूछना चाहता है ये. ओके, अच्छा. तो अभी मैं आपको लाइक ना लेट मी हेल्प यू आउट विद द डिफरेंस बिटवीन इंटर्नशिप एंड कोऑप प्रोग्राम्स. ओके, वो ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी श्रद्धा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर्नशिप्स एंड द कोऑप. तो इंटर्नशिप और कोऑप में डिफरेंस ऐसा है. फॉर इंटर्नशिप्स you would not be getting any payment for that. For co-op programs you'll be getting paid for that. Now co-ops are basically incorporated in that particular program itself. For example, if they're going for civil engineering or environmental engineering programs, so there are like good one semester would be of co-op because we believe in blended learning. Now blended learning is basically whatever you are studying in your theory, you'll be applying same in your practical. So to have the first hand experience, they would be having this co-op programs or project work. In that particular case, co-op programs are like paid internships basically. And my university has many co-op programs. Once they'll get into the admission process, they'll be able to understand what are the co-op programs available in my university. Okay. One of students had very good questions. Rakhi Vishnubai Chaudhary. She is from Ahmednagar. She's said that she is a national player of badminton in India. So based on the sports activity, can she apply for any extra benefits or scholarship or something like that on a based on their past extra curriculum like? Okay, so this is like extracurricular based scholarships and all, right? So in that particular case, for extra credentials, they can apply for the scholarships, but they cannot apply right from the start. Once they'll go there, they'll go there, they have to figure out whether they are fitting in that particular sports academy over there itself. Because I have more than 60 plus student-led organizations at my university. So if they are performing well over there, they'll definitely be able to get those financial aids from that particular student-led organization. Okay, great. So that's there. Okay, तो राखी जी ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप अपने जो क्रेडेंशियल्स है इंडिया में, जो आप बोलते हो स्पोर्ट्स में ये अवार्ड्स जीते हैं, तो श्रद्धा जी और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वो सारी चीज अपने साथ ले जाइए वहां पर after the visa, and you have to guided over in international department in UNBC in Canada. वो लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे किस तरीके से स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, और वो वहां पर जाने के बाद आप अपना सब क्रेडेंशियल्स वगैरह उनको शो कीजिए, अपने सर्टिफिकेट शो कीजिए, और आप जरूर उसके लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो. और यूनिवर्सिटी बहुत से अच्छे को स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देती है. ठीक है. अच्छा. So one more question, Shraddha, I have received from the students. Like the students are studied a bachelor's in your university, then what about their future course if he or she will apply for masters in Canada? How university are help those students who want to apply masters over there? Okay, a very valid question, Nishit. The thing is, usually students तो post study work permit के लिए पूछते हैं, कोई पढ़ाई के लिए पूछता नहीं है. लेकिन if they are graduating from UNBC, UNBC is University of Northern British Coloumbia. It is top ranked university in Canada. So the student who has been graduated from this university would definitely have a glorified future in terms of education as well, right? Because they are getting the training from the professional background with good 120 credit points. In that particular case, they've been
yeah, in that case they'll be imbibed by the very good universities like Victoria University. University of British Columbia would also accept the students from UNBC. So Okay. UBC is one of the topmost universities in Canada, right? For large universities. In fact, it is top first or second in Canada. So even students can study in topmost universities, so if they are Okay. graduated from my university. Great, great. Again, questions from the received the students from Vaibhav Joshi from Okay. Bhopal in Ahmedabad. Vaibhav Hmm. asking like UNBC, what is the national rank number? And the second question is UNBC, what are they receive the awards from the Canadian institution, as in Canadian institutions? Yes, how they are separate Okay. from others, basically. ओके, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ना, उन्होंने या मुझे नेशनल रैंकिंग पूछा है, मैं आपको वर्ल्ड रैंकिंग बता देती हूँ. अच्छा, क्या सो बात है, बताइए. हाँ, UNBC is like according to Times higher education, right? That is the Okay, world ranking okay. parameter. According to that, UNBC is under top 5% worldwide, which means it Okay, is featured under the group ranking of 801 to 1000th rank. Out okay, of 3 Canadian universities, UNBC is the only university which is under this ranking. okay. That's one thing. And about young Great. elite universities, yes, about young elite universities, young as in terms of which are like good 20-30 years old universities, okay, not Okay. like good 100,000 like 150 साल पुरानी, वैसा नहीं, जो नई नई यूनिवर्सिटीज है, ठीक है. अच्छा. इन दैट इट इज, हाँ, इन दैट इट इज रैंक्ड एज टॉप 250, ठीक है. तो ऐसा भी है. सो अगर पूरे कनाडा की बात करूं फॉर स्मॉल यूनिवर्सिटीज, now small universities, so universities are categorized into big, medium and small as in the number of students. So in my Okay. university there are 3800 students studying. It's a small university. Being a small university, उसका रैंकिंग इतना हाई आया है वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब Okay, से. okay. और पूरे हाँ, और पूरे कनाडा में इट इज रैंक्ड एज टॉप 3 फॉर मोर देन अ डेकेड. मतलब पिछले 10-12 साल से वो टॉप 3 पे है. क्या ऐसा बात है, है बहुत मेरे. बढ़िया. Congratulations for that, श्रद्धा. थैंक यू सो ओके. मच. अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स जो अपना ओनली फॉर दे आर फोकसिंग ऑन द स्टडी, एंड दो स्टूडेंट्स जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं आफ्टर अ 12th, उनके लिए यूएनबीसी वन ऑफ द वेरी गुड, वेरी रैंक्ड एंड द वर्ल्ड फेमस नेम. सो यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट. ये इतना अच्छा रैंक वाला यूनिवर्सिटी कनाडा में है, यूएनबीसी. और हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैप्स अपने साथ है अभी ऑनलाइन, तो बहुत से उनके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो इट इज़ आवर प्रिविलेज टू बी हैवी ऑन बोर्ड, श्रद्धा, कि आप. निश्चित, एक मिनट, आपने मुझे बताया टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जो बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं. Yes. बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ तक 12th में उन्होंने मस्ती में 12th कर दिया है, ठीक है. तो हाँ, इसलिए जो मेरे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है, जो क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटी ने वो नॉर्मल रखा है. मतलब 55% ओवरऑल विथ नो लेस देन 50. तो इतना कम इसलिए रखा है बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स को उनका कैलिबर समझ में नहीं आता है, तो वो वहां जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी मेजर पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू ग्लोरीफाई देयर प्रोफेशन इन द लेटर स्टेजेस. तो यूएनबीसी उनको डेफिनेटली ये सारे चीजें में हेल्प कर सकती है. ये एक चीज है. और दूसरा भी, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने से जो अर्निंग कैपेसिटी स्टूडेंट की बढ़ जाएगी ना, इट इज लाइक नो अदर यूनिवर्सिटी वुड एबल टू हेल्प यू आउट विद दैट. ओके. वन ऑफ वेरी गुड क्वेश्चंस इन टुडेज सिनेरियो पूछती है श्रद्धा ए पटेल कि ऑनलाइन सितंबर 20 ये गुड ऑप्शन है पढ़ाई के लिए जाना चाहिए यूनिवर्सिटीज में, कि उनको जनवरी 21 के लिए वेट करना है. ओके, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. थैंक यू मिस पटेल. अपनी देखो, नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर विथ यू, ठीक है. If I talk to you about only UNBC, okay, UNBC is a very top ranked university. Usually यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आएगा, स्टडी परमिट के लिए आएगा. सितंबर का
क्योंकि अपना एम्बेसी खुला नहीं है, so people would be skeptical whether to apply right now or whether to apply over there, right? Okay. If they are looking for study with like UNBC में without study permit, they can start learning online courses. Now Okay. these online courses would be like synchronized and asynchronized. वो थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। अगर Okay. वो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो असाइनमेंट्स होंगे, जैसे हम लोग अभी वर्चुअली बात कर रहे हैं, राइट? सही बात है। लेकिन समझ में आ रहा है, राइट? हाँ। वैसे ही उनकी पढ़ाई भी इसी तरह से होगी, ऑनलाइन होगा। दिस इज लाइक अ सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस, ठीक है? इन दैट पर्टिकुलर केस द स्टूडेंट, इट्स लाइक देयर आर टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स। एक वो है जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। दूसरा चीज ऐसा, अगर अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, वीजा में दिक्कत कम आएगी। Believe me, वीजा में दिक्कत कम आएगी। The reason being is everybody would be thinking of going into Jan 2021 intake, so there will be a lot of rush for Jan intake. And as you are aware, September is the major intake for Canada. Almost 100% universities are open for September intake, right? True. Now September intake is being affected by COVID-19, and that's why it has been the number of applications has dropped down. But now all of these applications would be go for Jan 2021 intake, right? Okay. तो आप समझिए competition कितना बढ़ जाएगा। इसलिए बेटर है अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और तब जाके सिर्फ आपको वहां पे जाके पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग, एक चीज और है, अगर आपके पास बीच में वीजा आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से अक्टूबर में वीजा आ जाता है, यू कैन स्टिल फ्लाई। आप यूनिवर्सिटी की सारी एमिनिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, सिर्फ आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो वैसे ऑनलाइन होगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। करेक्ट। तो राधिका जी, ये आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको ऑनलाइन स्टडी सितंबर 20 के लिए करनी चाहिए। इट इज़ अ गुड ऑप्शन rather than you have to wait for Jan 21 in a class study, right? तो ये हमारा ऑफिसर का रिकमेंडेशन है, और मेरा भी वही रिकमेंडेशन है कि अगर आपको पढ़ाई है तो आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे, और ये डिफिकल्ट नहीं है। ये इतना आपको मतलब इतना उसका डर रखने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन कैसे होगा भैया, नहीं होगा या दिक्कत आएगी। द यूनिवर्सिटीज आर हेल्प, यूनिवर्सिटी IT डिपार्टमेंट विल हेल्प यू, और आपके लिए बहुत ही अच्छा और नया एक्सपीरियंस होगा, और आपको उसमें फीस भी बहुत कम जाएगी, राइट श्रद्धा? फीस भी उसकी कम होती है सितंबर की, और सेम नहीं क्या है? इंटरनेशनल फीस सेम रहेगी सर। अच्छा, सेम इसमें they are providing the equivalent type of services for all the students, ठीक है? Not just that, they can travel to Canada also. तो उसमें उन्होंने फीस इसलिए उन्होंने फीस स्ट्रक्चर में कोई प्लस माइनस नहीं किया है। The only thing is अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स क्रेडिट का इतना अमाउंट लगता है, उतना अमाउंट तक आप पढ़ लोगे तो चल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर में कोई ये नहीं है। लेकिन वीजा डिनायल पे आपको रिफंड मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन डिपॉजिट, ठीक है? अगर मान लीजिए आपने कंप्लीट फीस पे कर दी है और आपका गलती से डिनायल हो जाता है, होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और एसडीएस के अंदर आती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और IELTS का स्कोर भी 6.5 नो लेस देन 6 है, फीस भी कॉम्पिटिटिव है, तो डिनायल आएगा नहीं है सच, ठीक है? अगर गलती से आ जाता है तो रिफंड मिल जाएगा जो डिपॉजिट अमाउंट है। Now, one of questions from the Neha Arunbhai Shah from Vallabh Vidyanagar in Gujarat. अच्छा, बेसिकली नेहा आस्किंग लाइक हाउ टू अप्लाई ऑथोराइज्ड एजेंट लिस्ट है आपका कहीं यूनिवर्सिटीज में? शायद इसका जवाब तो मैं ही दे सकता हूँ। है, आप हमसे अप्लाई कर सकते हो, बट श्रद्धा, द क्वेश्चन गोज टू यू। नो डेफिनेटली केयर इमिग्रेशन मैट्रिक्स के नाम से ज्यादा फेमस है, तो उनको काफी टाइम का उनको एक्सपीरियंस है, तो प्लीज इधर उधर जाने के बजाय प्लीज गो टू केयर इमिग्रेशन। उनका एंड टू एंड प्रोसेस टाइम, जो भी बोलो, काउंसलर्स का नॉलेज बोलो, इन आप नहीं मानोगे, मेरे को हर रोज 1-2 फोन आते बोलते मैम ये क्या है। सो दे आर वेरी एप्ट विद सो मेनी थिंग्स, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। थैंक यू श्रद्धा। हम तभी परेशान कर सकते हैं जब आप जैसे ऑफिसर हमको कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारे क्वेश्चन से परेशान नहीं करते,
क्योंकि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ना, नहीं। क्योंकि 17-18 एज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, उनके मन में बहुत से हम्म। होते हैं। और हमारा इंस्ट्रक्शन है मेरी टीम को, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस मालूम नहीं है तो आप आंसर मत दो, जब तक आपको उसका परफेक्ट आंसर नहीं मिलता यू कैन नॉट गिव द आंसर डायरेक्टली कि भाई ये नहीं, आप पूछो। और जैसे आप जैसे ऑफिसर है वो कभी परेशान नहीं होते हमारे बहुत से सवाल से, हमारी टीम के बहुत से सवाल से, तो हम ज्यादा से ज्यादा पूछना हमको अच्छा लगता है फिर। नहीं, लेकिन दैट इज साइन ऑफ वेरी प्रोफेशनलिज्म। कुछ भी आंसर देने से तो अच्छा है बहुत सही आंसर दो। और वो भी आपके जो प्रोसेस टाइम है, आपके जो एंथुजियास्टिक है आपके काउंसलर्स का, या जो प्रोएक्टिवनेस है ना, वो मतलब टू एकदम अमेजिंग है, उसमें कोई दो राहे नहीं है। Okay, one of students are asking how many हम्म। total students on campus and what about the international students? ओके, अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं, सो देर आर टोटल आउट ऑफ 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं। सो देर आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो मल्टी रिलीजनल काइंड ऑफ एन कल्चर वहाँ पे जो होता है, दैट इज अमेजिंग। एंड अमंग्स दोस, लाइक अराउंड 40% आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर टोटल स्टूडेंट्स का बात करूं मैं, उसमें से 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। वो 40% में से लगभग 60% जितने इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। तो वहां पे उनको ऐसा नहीं होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे, इंडियन सही स्टूडेंट्स बात भी है। दिखेंगे। At the same point of time, they'll be exposed to good Canadian culture, urbanized culture, ग्रेट, Canadian culture के साथ भी exposure मिलेगा उनको। सही बात है। और मैं यही बोलना चाहूँगा इंडियन स्टूडेंट्स को कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या ऐसी इंस्टीट्यूशन पसंद कीजिए कनाडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक बैलेंस रखे, क्योंकि आप इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी स्टडी के ऊपर, तकरीबन 26,000 रुपीज़, $26,000, सॉरी $26,000 अप्रॉक्सीमेटली इन अ ईयर, which is one of the huge amount in India. So why you are going to only for Indian experience? You have to go there with the Canadian culture. आप वहाँ कनाडा जा रहे हो तो आप उनका कल्चर सीखिए, आप उनके रीत बात सीखिए, आप उनकी हॉस्पिटैलिटी सीखिए, आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होइए, क्योंकि आपको जिस कंट्री में रहना है ऑफकोर्स आपको उसके फेस्टिवल, उसका ट्रेडिशंस और उसका कल्चर ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे वहाँ पर, राइट। सो ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके पास बैलेंस हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, और जहाँ पर श्रद्धा ने अभी बताया कि मोर देन 50 कंट्रीज स्टूडेंट्स आर देयर, सो यस इट इज़ वन ऑफ द गुड डेस्टिनेशन टू मिक्स अप। आपके सारे फ्रेंड्स इंडियन होए उसके जगह पर अच्छा है कि मेरी फेसबुक में या फिर मेरे सोशल मीडिया में 2-4 फ्रेंड मेरे मेक्सिको से दिखे, 2-4 फ्रेंड मेरे यूरोप से दिखे, 4-5 फ्रेंड मेरे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अफ्रीका कंट्री से दिखे, बहुत से थोड़े मेरे फ्रेंड नॉर्थ पार्ट ऑफ अमेरिका से दिखे, रशिया से दिखे, तो देखो मेरा कैसा बनेगा पूरा मतलब सोशल गैदरिंग जैसा है। तो ये यूएनबीसी ये प्रोवाइड करेगी सिद्धा। मतलब अगर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ही रहना है तो आप हॉस्टल में चले जाओ, इंडिया में, कोई हाँ बड़ी वो बात सही है, नहीं है। सही है। तो मतलब ये यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। ग्रेट सर, सही बात। you have to add on today's sessions because we are still receiving more questions, so ये difficult होगा, आपका ये valuable time है श्रद्धा, और मेरा ऑनलाइन नो नो, और आ रहे हैं, तो हम बाद में ये आपको शेयर कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है हम उनको वो क्वेश्चंस पहुंचा देंगे, ठीक है। और आप कुछ अपने तरीके से ऐड करना चाहते हो टुडे, जो भी लोग अपने को सुन रहे हैं या उनको आप मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को? हाँ, मतलब आई कैन हेल्प विद द प्रोग्राम्स दैट आई हैव। मेरे पास 37 प्रोग्राम्स है, एंड ओके, ऑल दोस प्रोग्राम्स आर प्रिटी रोबस्ट। मेरी ओके, एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव ब्लेंडेड लर्निंग, वी हैव कोलैबोरेटिव टीचिंग टेक्निक्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऑन फील्ड ट्रेनिंग। नाउ आपके जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनको एक सिंपल भाषा में बता देती हूँ। नाउ what are these things? Basically, whatever you're studying in your theory, no, you would be applying same thing in your practical, right? ओके, So that's the यस, reason that is really a very good, or that will definitely have a very good learning graph in your this thing.
अगर यूएनबीसी में जाना है, कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी कब होती है, सिर्फ पढ़ाई अच्छी है नहीं, ऐसा नहीं होता है. There are good 5-6 parameters that really helps you to excel in your life, and those things are, of course, your education is there, your earning capacities are there. The next thing is the community support. ठीक है, आपको यूएनबीसी में अच्छा खासा कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, सेफ्टी है, ठीक है, फिर आपका सोशल लाइफ अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है. नाउ इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज इन यूएनबीसी का जो प्लेसमेंट है या जो लोकेशन है, दैट इज नियर बाय द वाइल्डरनेस ऑफ नेचर. तो आप वहां जाके छुट्टियों में भी अगर माउंटेनिंग करने चले गए, रिवर राफ्टिंग करने चले गए, सो दिस आर ऑल एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी नॉट जस्ट एजुकेशन बट आपके लाइफ का, जो बोलते हैं ना कॉलेज लाइफ बेस्ट होती है, उस चीज के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए. सो दिस आर द थिंग्स. तो जब भी अगर आप एक माइंडसेट से जाते हैं कि मुझे सिर्फ इसमें जाना है, उसमें जाना है, उससे अच्छा एक्सपर्ट से बात कीजिए, आपका पूरा उसमें नॉलेज, उसमें रिसर्च कीजिए, आपको समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स का अच्छा कहाँ पे आपका बेस्ट क्या बोलते हैं सक्सेस, आपको कहाँ पे अच्छे से, जल्दी नहीं चाहिए अपने को, पर एकदम लेट धीरे धीरे भी नहीं चाहिए आपको, टॉर्टोइस के स्पीड से भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम आप एकदम स्लो हो जाओ ऐसे. हाँ, तो एकदम प्रॉपरली सोच समझ के विचार करके, क्योंकि दिस इज अ लाइफ डिसीजन. बिकॉज अंडर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक लाइफ डिसीजन या लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है आपके लाइफ का. आपकी मैक्सिमम जिंदगी वो 4 साल पे डिपेंड करेगी जो आपने जिस तरह से निभाए होंगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर सच काइंड ऑफ एन place where that will definitely give you not only one thing but multiple things in your, है ना. हाँ, बहुत बढ़िया बोला श्रद्धा जी आपने. आप अच्छे रैप्स भी हो यूनिवर्सिटी के साथ में, आप अच्छे मोटिवेशन भी हो. आज मेरे को भी अच्छा लगा ये सब सुन के, और मेरे को लगा कि मेरे को साल में 3-4 दफ़ा आपकी यूनिवर्सिटीज़ विजिट जरूरी करनी चाहिए टू द नाइस लोग. डेफिनेटली सर. तो आज के जो सेशन में हमने जो लाइव इंफॉर्मेशन दिया आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया, वन ऑफ द रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन कनाडा. तो उसकी ज़्यादा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप केयर इमिग्रेशन वीज़ा सर्विसेज, जो यहाँ पे नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर आप हमारा कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. वी आर ऑथोराइज्ड कंसल्टेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सिंस लॉन्ग. मेरी टीम आपको मदद करने के लिए ऑलवेज तैयार होगी. एंड थैंक यू वेरी मच श्रद्धा for sharing a very nice informative session today and give us a lots of students queries. आपने पेंडेमिक के बारे में बताया, आपने ऑनलाइन स्टडी के बारे में बताया, आपने वहाँ पे पढ़ना चाहिए ये बताया, उसके साथ साथ आपने कोर्सेज के बारे में बताया, कोऑप के बारे में बताया, एप्लीकेशन चार्ज, ऑथोराइज कंसल्टेंट, आपने स्कॉलरशिप्स के बारे में बहुत डिटेल्स बताया हमको, आपने कोर्सेज के बारे में, लोकेशंस के बारे में, मतलब जितने सवाल कवर कर सकते थे आपने सभी तरीके से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सेटिस्फाई किया. और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फ्रॉम माय एंटायर टीम टू जॉइनिंग इन अ लाइव सेशन फॉर अस. Thank you so much, Nishit ji. Thank you so much, आप for having me. The pleasure was all mine. क्योंकि आपके यहाँ से जो मुझे क्वालिटी स्टूडेंट्स मिलते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी काफी खुश है उससे. And yes, your team and you yourself is very enthusiastic for all of these things. I'm very happy to be associated with Care Immigration and Visa Services. एक लास्ट चीज बोलूंगी, पैंडेमिक की वजह से प्लीज पैनिक मत कीजिए. ऊपर से थोड़ा सा सोचिए, वहां पे केसेस बिल्कुल नहीं है. पूरे नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में एक ही कोविड-19 का केस है राइट नाउ, और यहाँ पे बहुत सारे केसेस है. सही बात है आपकी. तो बिल्कुल ऐसा पैनिक मत कीजिए. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर, नॉट टू वरी एट ऑल. एंड प्लीज स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड स्टार्ट एक्टिंग टुडे. ऐसा नहीं है कि ध्यान आएगा तब हम करेंगे, अभी से थोड़ा सा काम शुरू करिए. So it is easier for you to get into the flow later on. So thank you so much for having me. Stay connected, stay safe and protected, all of you. And good day to all of you. Take care. Yes. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye.